Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin live transmission. Today I'm very excited. Today's stream is going to be in English and Urdu. First, I'm going to do it in English, different sections of this stream, and then I'll keep translating it in Urdu also. So keep stick with me on this stream. We are going to discuss a lot of things, big adoption news from Amazon and Pepsi. I'm going to show you where they are investing, what they are investing in, and how they are coming into crypto market. And then we are going to have a small technical analysis a section where we'll see why I think that the bottom is in, the Bitcoin is at the bottom right now, and from now on it will go high for a long time period. So amazing contents today we have. You don't want to miss that. That's why I'm doing it in English and Urdu both. तो मेरे उर्दू नाज़रीन, आप आज के कंटेंट बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा. पहले मैं इंग्लिश में हर सेक्शन को बयान करूँगा, उसके बाद उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा. बहुत ज़बरदस्त कंटेंट्स हैं आज. बड़ी अडॉप्शन की न्यूज़ हैं. अमेज़ॉन पेप्सी जो है वो उस जैसी कंपनीज जो हैं वो क्रिप्टो में आ गई हैं. और इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिसिस में भी देखेंगे बिटकॉइन की ये अब जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल आखिरी डिप्स चल रही हैं, और ये जो बॉटम है वो इन हो चुका है. और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको उसको एलेबरेट करूँगा, बताऊँगा कि अब इसके बाद जो कई वीक्स और महीने जो है अपसाइड के शुरू होने जा रहे हैं. ऐसा क्यों होगा हम बात करेंगे आज की स्ट्रीम में. सो डोंट वांट टू मिस दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. Alright, so first thing first, before we go into the news, let's look at the market watch. The markets are right now down around 3.5%. Bitcoin, Ethereum, everything is down. All the big caps are down. Only XRP, amazingly, XRP is up 2.5%. And obviously, our coin VAX is up. If you can see that. 24 hour Gala is up, IOTX, Silo, Sandbox, and then Vax. That's is just a little bit down, but I'm going to tell you about the story about the Vax today. So very exciting news. Overall, the market is kind of consolidation mode. And we are going to discuss this in our technical analysis, that where we are heading from here, why I think that the bottom is in, and why I think that market is going to go very high from here, from this point. So this is the market cap. The news that I want to discuss with you guys and give you the content in English first, and then we'll switch back to Urdu language, is that that Pepsi is releasing their Ethereum-based NFTs. So this is a really big news. It is on Cryptos R Us website if you want to read out all about this news. But this is a great news for Ethereum. And another thing is that we know that Ethereum today is Ethereum's last day of mining. Today should be the difficulty bomb should be blasting in the mining rigs, and they should stop mining now, and Ethereum is converting into staking protocol now. So the Pepsi, actually, yep, we did that, introducing Pepsi, mic drop, our Genesis NFT collection, details in the thread below. So this is big news that the companies who has so much money and has footprints all over the world, like Pepsi, they are going into Ethereum-based NFTs collection. So this is huge, big news for Ethereum holders, for crypto in general, that this big adoption is just forming right now in front of our eyes. Because last year, the whole year, the major news was only Tesla, and we have been searching the next, and everybody was talking about that. Who
which big companies will be the next. Everybody was talking about Microsoft, Google, Amazon, every other company they can think of about it. But then Pepsi was like unheard of it, and nobody was thinking about Pepsi, that they can just you come into the. Now it's actually opened the floodgates for all these big companies like Coca-Cola, all the retail hunters, all the companies who deals with the retail sales. So it's a big market for the people, for the investors to go into that sort of adoption. This is huge. This is big for Ethereum itself and crypto in general. The next thing I would like to discuss is Amazon. Another big, very big adoption, which is Amazon. And Amazon actually they invested in a company called Dips. I'll discuss what Dips is all about in a minute. But then, what is WaxP? Wax is a blockchain technology, just like Bitcoin, Ethereum, Solana, just like that. It's a complete set of blockchain technology which provides the grounds for Dips, the app that Amazon invested in actually, that runs through Wax. So Wax is the protocol on which the application Dips runs on, and Amazon invested in Dips. What Dips does is amazing thing. Everybody knows that these game cards are a big thing. To hold these game cards, sometimes they go in millions. So get those gaming cards. So what they did is Dips is that they made out of those cards as an NFT, and then you can own a part of that fraction of that card. You don't have to spend like millions of dollars or thousands of dollars to own these cards. You can, whatever player you are interested in, or the card you are interested in, you can just own a fraction of it, which is just like a Bitcoin is like $50,000. You cannot afford to buy one Bitcoin, but yes, you can buy a fraction of it for $1,000, for $500. You can buy it. Still, you can buy a Bitcoin. The same concept here applied on those sports cards, that you can own that. And I tried that app on the iPhone, and I'm proudly owner of one NFT, Kobe Bryant NFT right now on Dips. Um, that's that's what I bought. Kobe Bryant 1996 NFT card. So this is, look, you can see the how cool this app is. It's very simple right now. You can deposit even $25 in that app, and they will give you another $25 in any NFTs, randomly selected NFTs on those cards. So this is the big thing Amazon invested in. You can even sell your, if you own your card, you can list your card on their site, and then you can sell fractions of those cards to different people. Um, this is this is huge. This is big. As I said, I already tested this in their app on my phone. I showed you guys, and it's super easy to use. An amazing concept, and if Amazon invested in this project, you can imagine how big it's going to be. I'm sure they're not just going to partner with them; they're going to acquire the whole company, or may have already acquired the company, Amazon. So this is the next big thing. So a couple of ways you can invest in this project. One, as I just showed you, you just download that app called Dibs in your phone, and then connect with your bank account, do the basic login registration process, and then start buying these fractions of cards that you own.
If you can also list those cards if you own, or you can own these cards from others who are listing them as an NFT or fraction of it if you like, because there are some cards which are like LeBron James and stuff like that. They are going for like $68,000, $100,000, so they are very expensive. So you can just own a percentage of it. So one thing is that's how you can invest in that. The other thing is you can invest uh, in VAX, and VAX as a whole is it is just this blockchain is dedicated just for NFTs. You can see their main target is NFTs, um, and you can see that what kind of brands um, they are already partnered with. So it's big. They're the partner with Atari's, Mattel, Street Fighter. We know Mattel is the biggest toy makers. Atari is one of the biggest games. Saw is a movie. Street Fighter is a game. Robotech, Funko, Bratz, you name it. I mean, AMC Theaters, Sony Pictures. They have some big names under their belt. Uh, so this is going to be huge, as I can see, um, and you can imagine that this kind of the Vax itself on its own is going to be very big. Um, Apart from the partnership with Dibs and Amazon that we just saw, but itself it's a very good project, and with a huge partnerships. You can invest in Vax, and how you can invest in Vax is you can buy their coin. It is available. It is right now in under dip a little bit, not dips the the project, but a price dip. It is. It went as high as and previously in 2017. I think it went as high as $2.50, $2.50, and it's right now it's only available for 59 cents. It's a good buy. It's a good buying opportunity. Yeah, you can see that. 2018, in 2000 January 2018 or late 2017, it went up to yeah, in December, in January 2018, it went up to $2.50 when it was launched actually. So right now it is in the actually you can see that the curve is going up, and right now the whole market is in dip. So this coin is also available at cheap price of 59 cent, almost 60 cent. I would say it's a good buy. It is available on KuCoin, Binance, internationally KuCoin for US residents. Crypto.com also has it. So it is available on variety of exchanges. Um, you can easily buy it. So this is another way of investing it, and reaping the benefits of Amazon partnership with shipping with them. So this is the coin. This is the project. These are the adoptions that I'm seeing. Really huge adoption news. Really big news are coming for from Pepsi and um, from Amazon. And not just only this, I would like to also share with you guys that a big gaming giant, Ubisoft, uh, they actually announces their NFTs on Tezos. So Tezos are also a good buying opportunity right now, because the big gaming giant like Unisoft, they announced their big game, which will include NFTs, and they will be available on Tezos. They will be utilizing on Tezos. So these are some of the really good pickups right now. If you ask me, that Tezos is also should be uh, under dip right now. Yeah, for almost 5% down. So $5, it is available at $5. And if we see that in again 2017, when it first launched, it was over $10 coin. So I mean, even if it goes back to their all-time high, it your money will double from here, from $5 to $10. So
and they have big news under their belt right now. So these are huge gaming gains opportunity for you guys to with the news that we are having right now. The markets, I would say, we look in the technical analysis why the uh, markets are. What I'm saying is the bottom of the market right now. If I quickly tell you in English, so I can just wrap up the English section here and then switch to the Urdu audience for the entire rest of the stream. Because this is the last part left now that I want to cover in this stream is why I think that this is the final dip we are in right now. So if we look at the 4 hour chart, we can see that under 4 hour charts, if we look at the Bollinger Band, we are touching at the bottom of the lowest side of the Bollinger Band, which is a kind of indicator that for the short term, the bottom is in and it should bounce back from this level. Another thing is the main thing that I would like to discuss is for a daily chart. If you look at the daily chart, and if you turn your attention to the RSI model right here, so the RSI is at 31 right now, and it hasn't been that low for a long time. If you ask me for on a daily chart, when was that last at that level? It was in July, start of August, when the markets start going to into the rally, that big rally after that. You see, whenever this much low, whenever the RSIs are this much low, you can see that the Bitcoin has a tremendous rally ahead, and uh, and you can see that it was at 35 in July, end of July. It was exactly at this level. If you see, it was at 32, 33, and right now it's 31. So you can see that this is one touching point. Another was when it was in May, and we see that it was in May when it went up down all the way to 22, 23. How strongly the Bitcoin rallies after that. um, and then the lowest part was in March. It was went up down up to 13. So in March when it went down, and we know that 2020 March what happened, when that thing came and everybody feared and all the markets collapses. At that time, the RSI was at 13, and then after that, we see a huge recovery from Bitcoin for a month, almost a year recovery. It went down to one couple of time, went down to under 35 territory, but not lower than that. So RSI right now, only we can see that if we look back 18 months of price action, we can see only 2-3 times RSI went up to that low where we are right now. Uh, there's a chance that it might go a little down because we are at 31, 32 number at the RSI right now, and it went down up to quite a bit from here as well, in under 20s, or even that big black swan event happened in March 2020. It went down all the way to 13. So there's a room down below, but we see that Bitcoin, whenever it fell down below this 30 point marks on our side, it comes right back up. And this is why I'm saying the bottom is in. Almost we are very close. If this is not the bottom, if $48,000 where Bitcoin is right now, 48,400, if this is not the bottom, then I would say maybe next couple of days or 3 days maximum. And the weekend is coming up, so I'm suggesting that maybe next week, going into next week, and especially when next week the Fed's meeting is there, maybe by then the bottom is
should be in. And if Fed comes up with any kind of bad news for the markets as a whole, then there's a chance that it will go further down to the levels that we have seen in March 2020, or in May this year, early this year, or in July uh, this year. So if we see that kind of price action, then definitely till next week, I would say we might see more volatility or sideways action. But after that, uh, the prices will go high for a long time of period of time. That's what I see. That's why I'm saying that most likely the bottom is in already, and we are going to see a huge price action very soon, and for a long time period. Bitcoin is well below, even on the daily chart. You can see that we are just touching the lower side of Bollinger Bands, and we are well below on 20-day moving average, simple moving average, which Bitcoin needs to acquire very quickly if we want to continue in the bull run. So by the end of this month, if Bitcoin goes back uh, on top of that 20-day moving average, um, that that will suggest that next week or so is very important. That will suggest the continuity of the bull run, and that's what I see is going to happen. So this is where I end my English section of my current live stream, and then I'll switch back to the Urdu audience now. Thank you very much for listening and watching. If you like, especially if you like these kind of contents, especially in English, please click on the like button, subscribe to encourage me, and in the future also you'll receive these updates on daily basis. Now, for okay, so अस्सलाम वालेकुम मेरे उर्दू ऑडियंसेस, आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा तो हो चुका होगा जो कि मैंने इंग्लिश में भी बयान किए हैं, और क्विकली आपको उर्दू में ट्रांसलेट करता चलूँगा। यहाँ पर हम यहीं से शुरू करते हैं जो आखिरी चीज़ हमने डिस्कस किया वहाँ पर, कि क्यों मैं समझ रहा हूँ कि बिटकॉइन और इथेरियम के जो बॉटम्स हैं वो इन्हें हो चुके हैं और इसके बाद अब मार्केट्स को ऊपर जाना चाहिए। उसकी मेन रीज़न जो है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर जो होता है RSI, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, उस इंडेक्स को बहुत ही स्ट्रांगली पूरी दुनिया में, सिर्फ बिटकॉइन के नहीं बल्कि और दूसरे भी जितने एसेट्स हैं मार्केट्स में, उनको यूज़ किया जाता है इसको, RSI को। और जब ये 30 से नीचे, 30 के अराउंड आ जाता है किसी भी एसेट में, तो ये उसको यही समझा जाता है कि अब ये बॉटम इन हो गया, अब इससे नीचे इसको मज़ीद ये जा नहीं सकता, बहुत ही ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर आ चुका है। तो अब जो है यहाँ से जो है बहुत चीप अवेलेबल है ये एसेट जो है, अब इसको यहाँ से ऊपर आना चाहिए। और बिटकॉइन ख़ास तौर पे देखा है कि बिटकॉइन इतनी नीची सतह पर रहता नहीं है ज़्यादा, RSI इसकी इतनी नीची सतह पर रहता नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ वापस ऊपर बाउंस बैक कर जाता है। हम अगर पिछले 18 महीने को देख लें तो हम देखेंगे पिछले साल मार्च में इतना नीचे हुआ था RSI बिटकॉइन का, जब जिस वक्त ब्लैक सन इवेंट आया था, सबको पता है क्या हुआ था। ये मार्च में यहाँ पर ये एकदम से नीचे ये डिप लिया, इसने पूरी दुनिया की मार्केट नीचे आई थी और ये तकरीबन 15 तक चला गया था RSI। फिर उसके बाद देखिए कितनी स्पीड के साथ बिल्कुल वी शेप रिकवरी की है प्राइस ने भी और RSI ने भी। और इसी तरीके से जो है बिल्कुल इस साल मई के शुरू में भी जब RSI ने डिप लिया था, प्राइसेस ने डिप लिया था, एक शार्प डिप आपने देखा था कि हमने देखा था कि कुछ घंटों में बिटकॉइन जो है वो 50% करेक्शन आ गई थी उसके अंदर ऑलमोस्ट। तो उस वक्त एक शार्प टर्न ने उस वक्त भी इसको RSI को नीचे ढकेला था 22 पॉइंट पे सिंपली। तो ये 2-3 दफ़ा पिछले 18 महीने में इसने डिप लिया है। रिसेंटली भी अभी हम देखें तो सितंबर के बीच में काफ़ी नीचे आ गया था, फिर उसके बाद एकदम प्राइसेस हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखे सितंबर अक्टूबर में। तो ये अब उसके बाद से काफ़ी नीचे आ चुका है और ये बिल्कुल इंडिकेशन है इस चीज़ का कि बॉटम जो है वो इन हो गया है। और हम ये डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो रोज़ाना के चार्ट का मतलब ये कि एक आधा हफ्ता आप दे सकते हैं यहाँ से इसको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला हफ्ता भी, ख़ास तौर पे जब फेड्स जो है वो मीटिंग कर रहे हैं कि वो बॉन्ड्स की बाइंग जो है उसको डिसिपेट करेंगे, अब रोकेंगे और होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात भी करें।
तो वो जो मार्केट उस पर रिएक्ट करें और नीचे आए, और एक आध डिप और आ सकता है अगले हफ्ते में, बट कंफर्म नहीं है। हो सकता है साइडवेज एक्शन चलते रहें, बिटकॉइन यहीं पे रखे अपने आप को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन मज़ीद चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत नीचे, और RSI में बहुत मामूली सी गुंजाइश रहती है अभी यहाँ पर, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी 31 32 RSI है चल रहा है, तो जो कि काफ़ी कम बिटकॉइन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी कम समझा जाता है। और इतना नीचे बिटकॉइन ज़्यादा से रहता नहीं है, बहुत ही स्पीड के साथ फिर वापस बाउंस बैक करता है वी शेप रिकवरी में। दैन यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन से कि अगर 48,300 48,400 इस वक्त प्राइस चल रहे हैं इसके, अगर यहाँ से डिप मज़ीद करता भी है तो 46 पे और 44 या 42,000 पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, और वहाँ पर ये एक्यूमुलेशन फेज़ हो सकता है इसका एक 4-5 हज़ार नीचे और जाके, और फिर वहाँ से डेफिनेटली जो है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर अप ट्रेंड हम देख रहे हैं, और आगे आने वाले सिर्फ चंद दिनों के नहीं बल्कि वीक्स और मंथ्स के लिए हम इसका अप ट्रेंड देख रहे हैं। ये ऊपर जा सकता है फिर बहुत तेज़ी के साथ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर। तो ये एक एनालिसिस थे मेरे, जो आज की वीडियो मेन टारगेट ये भी था कि आपको बताऊंगा किस तरीके से कि बॉटम जो है वो इन हो चुका है ऑलमोस्ट, या बहुत ही क्लोज है उसके इन होने के, और फिर उसके बाद जो है काफ़ी लंबा जो है अच्छे गेंस की तरफ जाएंगे। ये तो टेक्निकल एनालिसिस थे, इसके बिटकॉइन इथेरियम के भी सेम ही है। और जो न्यूज़ है आज की, जो बड़ी न्यूज़ हैं उनमें एक तो ज़ाहिर है पेप्सी की है कि पेप्सी ने जो है वो इथेरियम बेस्ड NFTs अपने, या माइक के NFTs हैं, पूरी सेट ऑफ NFTs है वो इशू किया है इथेरियम बेस्ड। और ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि पेप्सी जैसी कंपनी जो रिटेल में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया में उसका फुटप्रिंट है, वो जो है वो इसमें मार्केट में NFTs की मार्केट में आ गई है, क्रिप्टो की मार्केट में आ गई है, और इतनी ज़्यादा एडॉप्शन, इतनी बड़ी एडॉप्शन के साथ इथेरियम को आगे बहुत बूस्ट मिलने वाला है। और आज आखिरी दिन है वैसे भी इथेरियम का माइनिंग का, क्योंकि आज जो है उनका जो डिफ़िकल्टी बॉम्ब है वो ब्लास्ट होने जा रहा है। उसके बाद माइनिंग जो है वो नामुमकिन हो जाएगी इथेरियम के ऑलमोस्ट। तो प्रूफ ऑफ वर्क से वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग की तरफ जा रहा है, इथेरियम 2.0 की तरफ जा रहा है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि कहना चाहिए कि अभी बिटकॉइन को भी अभी और मज़ीद माइनिंग हो रही है बिटकॉइन की, और अभी होती रहेगी जब तक वो 21 मिलियन तक नहीं पहुंच जाते बिटकॉइन। लेकिन इथेरियम ऑल्दो के 100 मिलियन से ऊपर है उस इथेरियम की टोटल सप्लाई, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी अब। तो अब जितने हैं मार्केट में उतने ही रहेंगे, बस उसके ऊपर रहेंगे, और प्राइस जो है वो तेज़ी के साथ, और बर्निंग मैकेनिज्म तो शुरू हो गया है इथेरियम का, हम जानते हैं, तो वो ख़त्म भी हो रही है, बल्कि वो जो है ऑलरेडी मार्केट में उसकी सप्लाई और स्केर्सिटी इसकी बढ़ेगी, तो प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाएंगे इसके बहुत तेज़ी के साथ इथेरियम के, और इतनी बड़ी एडॉप्शन के साथ तो डेफिनेटली जाएंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी न्यूज़ एक अमेज़ॉन की आई है, अमेज़ॉन की न्यूज़ जो आई है वो ये कि अमेज़ॉन ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है एक कंपनी में जिसका नाम है डिप्स। और अमेज़ॉन की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि वो कोई पोर्शन नहीं लिया हुआ उन्होंने विक्स उसका डिप्स का, मोस्ट लाइकली उन्होंने पूरी कंपनी एक्वायर की होगी, या कर लेंगे वो मुस्तक़बिल करीब में। तो डिप्स कंपनी क्या है उसको हम देखते हैं, उसकी वेबसाइट पे आकर उसको मैं दिखाता भी आपको क्या वो करती है। लेकिन वो डिप्स कंपनी जो ऐप है वो बेसिकली वैक्स जो टोकन है, जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बिल्ड है, वो उसको यूटिलाइज़ करता है। और वैक्स इट्सेल्फ बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकचेन है जो कि NFT को सपोर्ट करती है। तो इसलिए ये पूरी जो चेन है, एक पूरे जो वैक्स जो बेस लाइन है उसकी, जो कि मेन प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर, उस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्स के नाम से जो एप्लीकेशन डेवलप हुई है, जो कि NFTs को जो है शोकेस करती है, स्पोर्ट्स के NFTs को ख़ास तौर पे। स्पोर्ट्स के जो आपके जो वो होते हैं कार्ड्स होते हैं, उनको NFT के तौर पे आप उसमें लिस्ट भी कर सकते हैं अपने कार्ड्स को खुद, और बाई भी कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में बाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं वो कार्ड्स, और टाइम के साथ साथ और महंगे होते जाते हैं। तो एक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसमें दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप खुद विक्स जो मेन जो उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक इथेरियम या सोलाना, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैक्स जो है वो इस वक्त 60 सेंट के अराउंड है, और $2-2.5 का तो ये गया था जब लॉन्च हुआ है 2017 के एंड में।
तो ये अगर अपने ऑल टाइम हाई को भी हिट करता है दोबारा, तो यहाँ से भी जो है वो आराम से 4-5x आप की मनी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, जबकि इतनी बड़ी एडॉप्शन इसके बेल्ट के अंदर हो। लेकिन सिर्फ अमेज़ॉन ही या डिप्स ही इसके लिए बड़ी एडॉप्शन नहीं है, बल्कि इसकी पार्टनरशिप बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर आप वैक्स की वेबसाइट पे जाके इनकी पार्टनरशिप पे नज़र डालें तो अटारी, मटेल, स्ट्रीट फाइटर, AMC थिएटर, सोनी पिक्चर्स, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। डिज़नी भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, मिकी माउस। तो ये काफ़ी बड़ी इनकी जो है ना पार्टनरशिप्स ऑलरेडी हैं, हो चुकी हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। इनके जो कहते कि इनका जो इकोसिस्टम है बहुत बहुत वसी ऑलरेडी NFTs में नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप खुद इस प्रोजेक्ट में वैक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो आप उसके जो टोकन हैं वो अवेलेबल हैं KuCoin पे, बाइनेंस पे और गेट.io पे। तो वहाँ पर आप ये टोकन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट इसकी है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जैसे प्रोडक्ट में। जो डिप्स जो प्रोडक्ट इन्होंने जिसमें एक्चुअल अमेज़ॉन ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है वो ये है। इसकी ऐप है, आप अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल कर सकते हैं डिप्स की ऐप आराम से, दोनों के लिए अवेलेबल है, एप्पल स्टोर के लिए भी और प्ले के लिए भी, तो एंड्रॉयड्स के लिए भी। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है बस, कि इस तरह के जो स्पोर्ट्स कार्ड्स होते हैं यहाँ पर बहुत मशहूर हैं प्लेयर्स के, इस तरह के स्पोर्ट्स कार्ड वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के चले आते हैं ये कार्ड। तो हर एक कोई जो है एक पूरा कार्ड तो नहीं ख़रीद सकता बार बार, तो आप उसमें फ्रैक्शन में कार्ड ख़रीद सकते हैं। और इवन अगर आप ओन करते हैं उस कार्ड को तो आप लिस्ट भी कर सकते हैं उस कार्ड को, और लोग फ्रैक्शन में उसको ख़रीद सकते हैं आपसे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है इस लिहाज से। मैंने इसको इंस्टॉल भी किया अपने पास, और इंस्टॉलेशन के वक्त अगर आप $25 इसमें अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करें तो आपको मज़ीद और जो है वो 3 इस तरह की फ्रैक्शंस रैंडमली जनरेट देते भी हैं, तो फिर आप उसको सेल कर सकते हैं और किसी एक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही मैंने किया कि मैंने उसको जो है एक कोबी ब्रांड का जो NFT है गेम का, वो मैंने बाय किया है। इस पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बड़ा ज़बरदस्त इसका इंटरफेस है। क्लिक करेंगे इसको तो आप इसका बैक साइड भी देख सकते हैं इस कार्ड का। ये 1996 के कोबी ब्रांड का, जब 18 साल के थे वो, उस वक्त का उनका कार्ड है ये। तो इस तरह के बहुत ही इजी टू यूज़ ऐप है। इसमें इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका खुद कार्ड बाय करें और वो कार्ड जो है फिर ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड उनकी काफ़ी वैल्यू बढ़ती है। आप ज़रूरी जस्ट लाइक बिटकॉइन के, बिटकॉइन $50,000 का है, पूरा बिटकॉइन नहीं ले सकते, तो उसका फ्रैक्शन $1,500 का ले सकते हैं आप। इसी तरीके से इसका भी है कि अगर ये कार्ड जो कि बहुत ही महंगा कार्ड है तो उसको आप उसका फ्रैक्शन ले सकते हैं आप, और जब वो ओवर द टाइम पीरियड उस कार्ड की वैल्यू बढ़ेगी एज एन NFT यू विल बी द ओनर, आप ओनर होंगे, उस परसेंटेज के मालिक होंगे, तो आपकी भी वो वैल्यू बढ़ेगी। आप उसको बाय सेल कर सकते हैं इजी के साथ, इजीली इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही इजी है। मैंने बताया आपको कि ऐप स्टोर की या गूगल प्ले दोनों के लिए अवेलेबल है इसकी ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन अवेलेबल है ऑलरेडी। आप जाके इसको ब्राउज़ भी कर सकते हैं कि और ये फ्री पैक मैंने आपको बताया कि जब आप साइन अप करें, डिपॉज़िट करें $20 या $25 डिपॉज़िट करेंगे तो आपको जो है वो 3 मुख्तलिफ NFTs जो हैं उसके कार्ड के वो आपको फ्री भी देंगे। तो इस लिहाज से बात खुद आप इसमें इन कार्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो अंडरलाइंग प्रोटोकॉल है इसका वैक्स, उसमें आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैक्स जो है वो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब और न्यूज़ आएंगी और प्रोडक्ट्स आएंगी दूसरी जो इनके पार्टनर्स हैं उनके हिसाब उनकी तरफ से वैक्स के ऊपर लॉन्च होंगी, तो उसमें इसके जो टोकन के प्राइस हैं वो भी बढ़ेंगे, तो आपके पास ज़्यादा जो है वास्ट एक्सपीरियंस होगा प्रॉफिट्स का और एक्सपोजर होगा आपका, सॉरी। जबकि डिप्स में जो है वो आप लिमिटेड हैं सिर्फ कार्ड्स की, गेमिंग कार्ड्स की हद तक। तो इसके अलावा एक और न्यूज़ जो मैंने इंग्लिश में भी शेयर किया, आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा मैं, वो है टेज़ोस के हवाले से है कि एक बहुत बड़ा गेमिंग की दुनिया में नाम है, यूबीसॉफ्ट गेम्स बनाते हैं। उन्होंने जो है वो अपना एक नया गेम जो अब लॉन्च कर रहे हैं उसमें जो है NFTs को बाकायदा
जो है वो इन गेम्स के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और वो एनएफटीज जो हैं वो अवेलेबल होंगे टेजोस जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है टेजोस के हवाले से भी। टेजोस के प्राइस जो है वो $5 का एक चल रहा है टेजोस, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये भी जो है वो अवेलेबल है, कॉइन बेस पे भी इवन अवेलेबल है बहुत ही ईजीली। कॉइन बाइनेंस पे, crypto.com पे तो काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, और ये तकरीबन $10 से ऊपर तक जा चुका है ऑलरेडी। तो इस वक्त अगेन 50% डिस्काउंट पे मैं कहूँगा अवेलेबल है $5 का। आप जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर ये ऑल टाइम हाई को भी हिट करता है, जो कि इतने बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है और वो अपना NFT लॉन्च कर रहे हैं इस पर, तो बहुत ऊपर जा सकता है, ये भी डबल हो सकता है। आज की स्ट्रीम जो है बेसिकली NFTs के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, काफ़ी न्यूज़ देख ली हमने एडॉप्शन की, और कितने बड़े नाम जो हैं वो क्रिप्टो में आ रहे हैं। इसके अलावा हमने टेक्निकल एनालिसिस भी की है कि बिटकॉइन का क्यों लगता है कि अब बॉटम बहुत क्लोज है या इन हो चुका है ऑलरेडी, और बस यहाँ से जो है बिटकॉइन किसी और भी ऊपर की तरफ जो है टर्न लेगा। और इस वक्त अगर आपने ऑलरेडी बाय किए हैं, परचेज़ किए हैं, कोई भी आपकी जो भी एसेट्स हैं, उनको होल्ड करने का टाइम है, सेल करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि अब जो है वो गेन का टाइम है। और शॉर्ट तो बिल्कुल ना करें, अगर मार्केट को अगर आपने शॉर्ट किया है तो यहाँ से, तो आपको जो है काफ़ी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। जो ट्रेडिंग में डील करते हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही, और कल जो है फिर इंशाल्लाह हम देखते हैं कि प्राइसेस किधर जाते हैं, कहाँ मूव करते हैं, और कोई और इस तरह की कोई नई न्यूज़, नया कॉइन, कोई नई बात होगी तो आपको ज़रूर आपको इन्फॉर्म रखिएगा उन चीज़ों से। और अगर आपको लगता है कि मेरी इन स्ट्रीम से, मेरी इन तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूँ उससे फ़ायदा हो रहा है आपको, या फ़ायदा हो सकता है आपको, तो आप प्लीज़ मेरी जो स्ट्रीम्स हैं उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं डेली बेस पे। और बाद और एक से ज़्यादा स्ट्रीम भी करते हैं हम, अगर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है या कोई इवेंट होता है तो उसके आपको इन्फॉर्म रखते हैं उसको। इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, ताकि आपको फ़ौरन उसके पता चल जाए, नोटिफाई हो जाए। नेक्स्ट स्ट्रीम तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।